ये हिमांशु बोला ना ये लोग यस पीआईओ ऑनलाइन है इसमें। नहीं सर एफिलेंट और पीआईओ नहीं आया। क्या है वो? डोंट नो। डोंट नो। अच्छा वो हम लोग लास्ट टाइम आपका फॉर्म एक को एपीआईओ को दे दिया था तो उसके बाद में कुछ आपको एपीआई पीआईओ से कुछ इंफॉर्मेशन कुछ मिला। जी, जी। तो हम लोग वो उसको आज जजमेंट दे देंगे उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए एंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर वो नहीं देने से हम लोग एक्शन इनिशिएट कर लेगा। बार बार तो हियरिंग नहीं कर सकता है ना। The PIO action without consent and appealant program online has stated that despite the order of the commission dated 21/1 2025, 21/1 2025, the PIO has failed to provide the information as applied and third the amend, amendment amendment of the Form A of the appellant in front of the APIO, APIO, who had assured to provide the information as applied on or before the next date of hearing, which is today, 20 March 2025. The Commission observed, observes that the PIO has no intention to provide the information to the appellant, which is violation of the RTI Act 2005 as soon as disrespect to the procedural law coming from the state act. Some circumstances, the Commission hereby orders
the PIO provide the information completely to the excellent obviously whatever comes to the within 1 month of the day, but it's to the appellant to collect the information and the official the PIO free of cost. PIO to estimate this commission regarding the action taken. As yeah, as today is the sixth hearing of the claim appeal, the commission hereby orders the client to provide the information to the lender and hereby dispose against the appeal ex parte. दोनों दोनों हाँ हम लोग ने पीआईओ को ऑर्डर कर दिया विद इन 1 मंथ आपको इंफॉर्मेशन को देगा और इन केस इफ वो फेल करता है तो हम लोग उसको या तो पिनलाइज करेगा या डिसिप्लिनरी एक्शन वट एवर सूट्स बेटर वो करेगा और अभी से नो फर्दर हियरिंग दिस इज द वी हैव डिस्पोज दिस केस ex parte with the order that the PIO is to give you the information within 1 month and then you have to go receive the information free of cost and then PIO has to intimate to this commission regarding the informations being provided to you or no. And so we dispose your case, we dispose your appeal. एक महीना में नहीं नहीं देने से डू लेट अस नो आप भी हम लोग को इंटीमेट कीजिएगा आज से एक महीना No, उसमें यू राइट टू अस आपका एक और हम लोग अभी एक नोटिस भेजा पीआईओ को because instantly so we cannot take actions no so initiate actions but we have to give a fair chance of being him of being heard and replying no he has the right to reply as to under what circumstances he couldn't be giving you the information so next may at the end at the finish of the date given to him will initiate disciplinary action against him. Next, epic number 150, Pisah Tapam Basel, GLRSO, Colombia. Yeah. Yeah, yeah. Please, ma'am, this side. Yeah. Yeah. Pisah Tapam up here. He's Okay, okay, okay. Pisah Tapam online, na? Yeah. Okay, okay, okay. My humble submission before the Honorable Commission, sir. On 5th of February, we received an order, this Honorable Commission, to the effect that the DLRSO Florian had not replied to the questions made by Pisa Tapon, and that the director also has not taken any action against the DLRSO. In this regard, humbly
placed before the Honorable Commission that the Director's Office was not in receipt of any correspondences regarding this case, and therefore I myself personally came to the Honorable Commission as we have the highest respect for the Honorable Commission. And so we came ourselves, I came myself, and then I checked the records. And it was evident from the records of the Honorable Commission, the dispatch branch, that no letter was issued to the director, and hence our inability to appear on 21st of January and also on 14th of November. On 14th November also, that summons also we had not. And thereafter, sir, we took the initiative to talk to Deputy Commissioner Coloria and DLRSO, and I placed before the Deputy Commissioner Coloria that there is this case where Pisa Papam was supposed to have been informed about the queries that he had raised. So I requested them to locate the documents and then give the replies to the queries. The Deputy Commissioner has been in touch with me many times over the phone also, and letter also I've written. So the Deputy Commissioner, sir, in this regard, as soon as I got copy of this, the summons of the order dated 14th November, I had issued a letter. Informed the Honorable Registrar, the learned Registrar of the Honorable Commission, that we have not received copy, and therefore now that we have received copy, so we will inform. So accordingly, sir, I think that I'd like to submit this record. So this letter was sir, written to the Registrar of the Honorable Commission with a copy to the DLRSO, informing of our non-receipt of that response, both the subs, both the both orders. Thereafter, again, mm, thereafter again, I spoke to DC Korea. Then she assured me that she will ensure attendance of the DLSO. In this regard, sir, I just very humbly I'd like to place before the Honorable Commission that, as you are aware in the papers also you might have seen, the position of the DLRSO Korean is very, as of now, unstable because right in the beginning, one UDC was in charge. Then thereafter again, one officer was sent, but then he again tendered his resignation. So at that point of time, when the appeal was made, appeal for the information, so we need to locate who was that person, who was the PIO in charge. So I had requested DC Florian to locate because they could not trace out any of the documents. Right now, also the DLRO in charge, he's in charge of DLRO Florian. Basically, he's an administrative officer, but he's having to look after the charges of DLRO Florian because the officer, the regular DLRO who was sent, he had tendered his resignation. So that is the situation, and we are processed that file also regarding his resignation. And in the meantime, till such time that the Department of Land Management post a regular DLSO, the DC Nyakan has been put in charge. So according to the DC and also the DLSO, he himself will also in charge. He will also speak. They are not in receipt of the queries made by the appellant Mr. Tafa. So again, sir, I had given a show cause notice because I had to then take you know the subsequent order of 21st January also. So again, I had issued a show cause notice requesting that he was directed to show cause. Of course, this was very recent to explain as to why he was unable to attend the hearing of the Honorable Arunachal Pradesh Information Commission and to reply to be submitted within 7 days. But sir, both DC and DLRSO has personally informed to me that they are not receipt of the queries of the applications made. So I request the Honorable Commission to consider the case of Colorium. And so I needed a point to be myself present so that I could apprise the Honorable Court of the gaps that sir that is made. So this letter also I have issued for this requesting him to give the information. However, so he himself and the DC have informed me that they could not trace out the documents. So if copies of the
queries of the applicant can be made available to the DLRs in charge for review. So we will endeavor to give it at the replies. Madam, like in that way, the appellant has asked information from 2020 to 2023. So by his statement, we presume that there hasn't been any regular PLRSO from that time to till this day. From 20, Yes, yes. No, 20. his application is uh, from 1st January 2024. Sir, the So exact timeline I will 2024. have to consult. Yeah, I'm yeah. not I mean, I'm not born in the department. Yes, I yes. have come in 23. So I Okay. can speak for 23 onwards what was happening. No, no, no. I mean to say his application is from Okay. January 2024. He Jan- filed his application In on January 8, yeah, in 8th of January 2024. But we At have, that time, sir, there was no DLRS or regular, although we had posted, but then joining was not happening for various multiple reasons. There was in the assembly honorable floor of the honorable legislative assembly, also this question was taken up. Although we had posted for some reason or the other, which can be best explained by the administrator there, the joining could not materialize. But so one group C of person was holding in charge, guided by the higher authorities. So thereafter, sir, we posted in finally in November. November, the DLRSO had gone, and then the DLRSO who had gone, he had tendered his resignation. so, had there been a regular DLRSO, we could have ascertained that the application had been received on which date, or whether the application has not yet been received. Because we cannot go by the date of the applicant. No, we have to go by the date on which the application was received by the PIO. That, Right. that date we have to count. Yes. But then the date of the appellant is 8th of January 2024. Yes. Now, you are not sure like this form A is with the has been received by the Yeah, DLRSO. as per the confirmation from DC and also DLRSO is here, Yeah. they have not this person Yeah. has not been able to kind of because he joined recently with it, Yeah. so he has not been able to trace out that document, and we request the honorable commission to allow us a chance to get copies of the application made by the applicant so that we can address it afresh because it has not been received by their office as informed by DLRSO and also the DC with whom I'm in touch. Yes, sir. The director of technology LM government of Pradesh, who is director of the authority of the PIO in the instant appeal, is present in the court and stating and stated number one, there hasn't been any regular PLRSO just 2024, 23, 24 till now. And presently, the ADC, Yapin, ADC in charge now. ADC in charge, Yapin, is taking additional charge as the PLRSO. This is also sir by order of the government plan department. By order of the LM, again of LM government of LP. And yes, so yes, there was no regular PLRSO. For receipt of the form A of the appellant is also
not ascertained because so They said not yeah, available. yes, not ascertained. So As informed by Sir Dira. So yes, please. as informed by the developer as soon as the DC. And next man requested the commission to give a fair chance to to ascertain the form A of the applicant. No. I'm recording the statement of the director LM. I'll come to you now. So आपके पास में I think he won't have the copy. No, yeah, he doesn't Yes, have the form first है. mistake. So आप आ जाएगा मैम. yes, yes ma'am. आप आ जाइए. Ah, you can right. आप इसका एक फोटो कॉपी आपका टेलीफोन मोबाइल टेलीफोन से ले लीजिएगा. The commission made available the copy of the form A of the applicant and in jailers in charge jailers to get photocopy of the form A on his mobile telephone. So we'll presume, from today, the DLSO in charge, who is the PIO in charge also, has taken a photocopy of the form A. So we'll put it on record that the form A has been seen and received by the PIO in charge from today. Then आप देख के इन्होंने तो मांगा है. He has asked the details, furnish the details list of LPC issued in favor of applicants. ईशा तपम आप एप्लीकेंट्स टाइप क्या है. आप एप्लीकेंट्स का मीनिंग आप एप्लीकेंट आप है. आप फिर इसमें प्लूरल एस लगा दिया है. आपके साथ कौन कौन और एप्लीकेंट है. सर ये एप्लीकेंट नहीं है. मैं मानता हूँ कि एप्लीकेंट जितना भी जो हम लोग का एलपीसी जो ऑब्जेक्ट करता है वो क्विक एप्लीकेशन का कितना है वो सर्वे ने आपको नहीं पता. 5 पॉइंट बजट का रिकॉर्ड है वही है. यानी कि आपने जितना भी ये कुरुंकु में डीआरएसओ ऑफिस में आज तक एलपीसी अप्लाई किया वो सब एप्लीकेंट्स के बारे में बात कर रहा है. जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल. हाँ ये इसको मैंने मंगाया सर. और आप दूसरा में मांगा है required furnish the details required document submitted by the applicant for obtaining LPC. आप सर सुन रहे थे ना. थर्ड में he has asked for furnish the detailed fees received while issuing of LPC in favor of applicant. फोर्थ में furnish treasury challan of each applicant against issue of LPC. एंड लास्ट में उन्होंने मांगा है फर्निश रेवेन्यू कलेक्शन डाटा ईयर वाइज इन एंटायर कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट. तो इसे तपम यहाँ पे आपके केस में डायरेक्टर मैडम खुद आई हुई है. एंड देन डीआरएसओ इंचार्ज एडीसी आए हैं. एंड देन वो लोग ये बोल रहे हैं कि अब तक 23 तक कोई रेगुलर डीएलआरएसओ नहीं था. तो by that way there was no any PIO, regular PIO to address आपका भी किसी और का भी. एंड अभी तक भी ऑफिस को मालूम नहीं है कि आपका ये एप्लीकेशन कहाँ है कहाँ नहीं है. तो वो लोग के पास में ये कॉपी नहीं था. तो आज हमने आपका जो फॉर्म ए है इसको वो लोग को अवेलेबल कर दिया है. उनको फोटो अपना मोबाइल कैमरा में सर ने फोटो ले लिया है. तो अभी आपका डेट को विल स्टार्ट द टाइमलाइन फ्रॉम टुडे ओनली.
आप 2010 जी 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 हाँ ट्वेंटी वन पे whatever be the competent authority stating something in the code, no, उसको तो we cannot take it as false. After all, अभी competent authority यहाँ खड़ा होके बोल रहा है कि whatever she or he speaks to court records that. तो वो नहीं नहीं वो तो आप बोल रहे हैं ना. नहीं 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 वो लोग नहीं देगा बोल रहा है. वो लोग ये नहीं बोल रहे कि आपको नहीं देगा. वो लोग देगा बोल रहा है. आपका जो इंफॉर्मेशन को देगा लेकिन टाइमलाइन जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. आज से वो लोग को आपका एप्लीकेशन को मिला करके दे आर कीपिंग इट ऑन द रिकॉर्ड. आपको इंफॉर्मेशन डिनाई करेगा वो नहीं बोल रहा है. जी 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 नो. आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा लेकिन आपका डेट आज से चालू होगा. तो आपका 24 से वो होगा. तो सर आप तो देख लिया तो ना. Whatever information are there in your office, kindly provide him within a month's time. That is the stipulated time given by the act law. तो बट हम लोग आपको आगे वाला जेरोसे से we won't keep the threats still here. आज के बाद से अपने एप्लीकेशन को फॉर्म एक को मिला है. And जो जो उन्होंने मांगा है आप एक महीने के अंदर में दे दीजिए. इनका लिंक वेरिएशन डॉक्यूमेंट का एकदम जायज है. ये क्यों नहीं मांगा? ये सब होना चाहिए. कि हमको जो फाइल इंडेक्स नहीं मिला है. अभी किसी मेन को भी हम बात किया. जब ज़्यादा से ज़्यादा तो फाइल इंडेक्स हमको चाहिए. उसका मतलब इन्वेंटरी रजिस्टर क्या क्या सामान है करते हैं. फाइल इंडेक्स कौन सा फाइल किस रोज का है, किस डेवलपमेंट का है, आईपी रोज का, ऐसे कुछ भी नहीं मिला है. अगर इसको ट्रेस करके ये The commission observes that the statements of the competent authority, who is the director of the Land Management Department, Government of City, therefore, the receipt of the form of the appellant is recorded to be acknowledged and submitted. Acknowledged, submitted, received today, that is on 20th March 2025 by the PIO. You understand that? Number plus in charge
DLRSO come ADC संग्राम एक यापिन to provide the information to the applicant within 1 month from today. Second, the available warrant of arrest stands cancelled as PIO charge is present in the year. The thing there. Information being provided to the applicant. The commission. It's an date of meeting. On fifth June. And we have fixed the literature hearing to ascertain if the informations have been provided or not. In 5th June. 10:30. 10:30. Send the copy to the officer in charge. After Sangram for the 6th of June. Yeah. Lorient Sapien. Yeah. Police station. पुलिस स्टेशन है सर Okay. Yeah. Lorient को भी Yapin को भी देखो. For the cancellation of the available warrant available. So पिशातप्पम हम लोग ये नेक्स्ट आपको मिला कि नहीं मिला हम लोग उसको एसर्टेन करने के लिए जो 5th ना 5th जून 10:30 को फिक्स किया फिर 5th जून 5 जून हाँ 10:30 है तो आपको याद करना है the date starts from today and then within 1 month is the time given according to the law by the PIO to the PIO to the information for the evidence. First of all, I shall trace out the person. Yes. Find out the articles. Those information then are with you. You have to provide, and those information that are not with you, you have to let know the applicant that with whom it would be there. That is in the act. If you don't have the information, you have to pass it on the application to the competent authority with whom the information will be available. But the time duration is only 1 month. So we fixed next date. In case if you have given the information in between and if you don't have the time to come down here, you can come online. We are providing you the online facilities. As soon as our office will get, we can hear you. So we cancel the warrant of arrest also. Next, 4202, Bengia Tani versus E. Vidavedi Sangram. नहीं आया अब appellant है. last time भी आप absent था ये फोर्थ ईयर सर ये अभी PIO अभी नया चार्ज ले लिया ये ऑर्डर रिवा आ गया तो उससे हम कांटेक्ट करने के कांटेक्ट नंबर लेके आपको ये बाय कॉल इंफॉर्मेशन देगा वो लेकिन कॉल भी रिसीव नहीं होता है
तो अभी तक तो मेरा स्टिचिंग कैसे सर अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं मिला कभी कभी कॉलोनी से इधर आना जाना भी प्रॉब्लम हो जाता है कॉलोनी और संग्राम भी आपका ये 37 किलोमीटर है आता है नहीं होता है फिर हम लोग को वापस जाना पड़ता है या तो ईटानगर से इधर आना पड़ता है तो बस एक अगर वाइफ और टेलीफोनिक से भी एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपका इन्फॉर्मेशन जो मिलना था ये बोले हम खुद कलेक्ट कर लेता है इससे हियरिंग भी आपका इसमें आता है तो नहीं होता है ऐसे नलन वाइफ तो अच्छा नहीं तो अभी तक तो ये मेरा स्पीचिंग है अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला Actually, engineer हाँ, PWD पे संग्राम. Yes. हाँ, तो चाहिए सर सर इसमें एक्चुअली जो पहले जो आप लोग ने जो 3 बार जो नहीं आया हमारा है ना जी. वो तो ट्रांसफर आउट हो गया तो इस विषय में हम जब से सर ये किया है हम अटेंड भी कर रहा है पहले भी एक बार यहाँ में आया है तो इस बार भी सर हम एक्चुअली आप लोग ने जो सर को अरेस्ट करके ये प्रोड्यूस करो ऐसे बोला है तो संग्राम पुलिस स्टेशन ने हमको बुलाया जी. हम बोला है सर कल अपेयर किया हम बोला आई एम नॉट नाम गया था ना आई एम ए न्यू पर्सन ऐसे बोला है वो लोग बोला आपको तो एज पर कोर्ट ऑर्डर अरेस्ट करना ही पड़ेगा तो बोला है तो आप पिलर भी लेके आओ अरेस्ट करके आपको रिलीज कर देगा ऐसे बोल के सर ये अरेस्ट सबसे पहले बोले हमको संग्राम पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया ये जो मेरा आप लोग का कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए उन्होंने हमको किया सो टू बी वेरी फ्रैंक हम भी नया नया सर आया है ये प्रोजेक्ट के बारे में इतना मालूम भी नहीं है तो इसलिए स्टडी कर रहा था अभी जो भी है जब भी बुलाने से तो हम भी एक दो चार का ये में आया था तो इसको भी ऑलरेडी आएगा बोल के सर हम सोचा है ना अभी इसलिए मेरा पूरा फॉरवर्डिंग में गलती हो गया बोल के मेरा अभी ये सर फॉरवर्डिंग करने किया है जो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन सर हम लोग को मिला है और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला है जो जैसे जियोटेकिंग का सर अभी वेबसाइट पूरा क्रैश है के समय में वो हम नहीं दे पा रहे हैं और वो उत्तर नहीं मिला उसमें डिटेल अभी उसमें ये आएगा सर दे देगा ऐसे करके सब चीज जो मिल सका है जैसे टीम का कुछ डिटेल्स मिला है प्रोजेक्ट का सेंसर मिला है जो मिला है सर उनको आज हम लोग दे देंगे सर और जो सर नहीं जो नहीं मिल सका वो और देगा और नहीं मिलने से भी तो सर इसमें तो क्या करेगा आप लोग का जो बॉर्डर प्रोसीडिंग है वो तो चलते रहेगा हम लोग भी उनके नहीं मिले अभी तो हम कोशिश किया है इतना भी धूमधाम किया तो निकला है ना अभी आपका आपका खुद का फॉर्म में आई है आप मांगा है all the work executed under Colorian Sub Division 2020 to 2023 ना आप लास्ट आपका प्रेडिसेसर्स लोग एक बार भी नहीं आया था इसलिए हियरिंग भी नहीं कर पाया इसको भी हम लोग डिस्कस भी नहीं कर पाया इसका ये जायज है कि नहीं है कोई कोई आरटीआई एक्टिविस्ट लोग एकदम नाजायज वे में फाइल करता है तो अभी आप बताइए आप 3 साल का इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं इतना सारा उस कोलोडियन डिवीजन सब डिवीजन में तो वो तो बहुत सारा होता होगा सर ये स्पेसिफिक हम इस ये सर ये शुरू में एक बार ये आपका ये पहले तो कहाँ का है हम कोलोडियन में का है हाँ ओके ओके कोलोनी का ठीक है उसमें ठीक है शुरू में ये सर नहीं तो हम एलो नहीं करते हैं अभी मेरा कोर्ट में जो यहाँ बैठ के उधर तवांग बोमडिला हुरुंग में जो यहाँ का पब्लिक होके हाँ क्योंकि आरटीआई तो पब्लिक इंटरेस्ट है पब्लिक एंटरटेनमेंट और राइट हाँ पब्लिक होने के बाद तो हम तो यहाँ पे नौकरी करने से भी तो हम तो यहाँ का पब्लिक नहीं है हम यहाँ का पीएचई में या पीडब्ल्यूडी में ये वस्तु व्यवस्था क्यों ठीक से नहीं बने हैं नहीं बोल सकते बिकॉज आई एम नॉट इंटरटेल पब्लिक हियर तो वहाँ का इसलिए हम पूछ रहे हैं आप कॉलोनियन को तो ठीक है चलो ठीक लेकिन अब इतना सारा पूरा वर्क का 3 साल का आप सोच के देखो आप खुद पीआईओ है आप दे पाएगा ऐसा नहीं सर ये इसको हम लोग क्यों मांगा है सर ये इससे पहले भी जो आपका ये पी आई है नव्या पता है हाँ तो हम लोग इसमें देख हम खुद कोलोनी का है हाँ तो हम देखता है सर काम जो एग्जीक्यूट नहीं होता है तो पॉलिटिकली लिंक करके ना सर जितना भी काम है बिना ये एग्जीक्यूट करके ये पेमेंट रिलीज कर देता है तो ऐसे करके आपका उसमें उस दिन ये एक मौजूद पेपर आया था ना हम्म,
नहीं ये फर्स्ट एप्लाई तो चीफ इंजीनियरिंग का उसमें चीफ इंजीनियरिंग का उसमें एक ये ई का एपीआई एक आया था ये बीनी करे का साथ में आया था यारी में ओ फर्स्ट टाइम देखा है ना इसमें भी हम ये उसमें भी हम प्लेस आउट उसमें भी आप लोगों को बोला था ना अल्टीमेटम ये 15 डेज में डॉक्यूमेंटेशन फर्निश करो बोला था ना मिला था ना 45 days में। हाँ नहीं सर उसमें सर ये जस्ट एक सिंपल से एक स्कीम का था आपका ये कम्युनिटी हॉल जस्ट 50 lakhs का क्योंकि ये कलोरिंग बोलने से सर छोटा एरिया है ना अपर कलोरिंग लोअर कलोरिंग ऐसे मालूम होता है तो न्यू बाजार में एक छोटा सा एक जगह में एक सेंसन आता है सर स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता तो स्ट्रक्चर तो अगर न्यू बाजार के लिए सरकार जो सेंसन किया है उसको तो आप ईटानगर या अलग जगह में डाइवर्ट करने वो तो नहीं होगा ना तो स्ट्रक्चर तो हमको दिखाई देना पड़ेगा तो हम लोग स्पेसिफिक हम लोग चौकस करके निकाल देता है कि ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं उसको छोड़ दीजिए आप 2020 टू 2023 3 साल का तो बहुत वॉल्यूमिनस होगा वो। हाँ वॉल्यूम लिस्ट तो है हाँ वो तो उतना तो हम आपको देने नहीं बोलेगा। आप पूरा 1 साल का ऐसा मांगो जब आप पूरा डिवीजन सब डिवीजन होल सब डिवीजन का मांग रहा है आप स्पेसिफिकली एक स्कीम जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ये रोड वो रोड या ये बिल्डिंग वो नहीं बोल रहे तू आप मांगे ऑल द वर्क बोल रहे तू आप ऑल द वर्क एग्जीक्यूटेड 3 साल में कॉलोनियल सब डिवीजन में जितना भी काम किया है उसको बेचारे वो लोग अभी मार्च में काम करेगा ना आपको आरटीआई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में लगेगा वो भी है ना अब थोड़ा एक नहीं सर इसमें ओल्ड वर्क ओल्ड वर्क लिखा हुआ है सर इसमें स्पेशल मेंशन दिया है ना वर्क का नाम मेंशन दिया है नहीं वर्क का नाम कहीं भी नहीं है मेंशन दिया है नहीं है आप ओल्ड वर्क एग्जीक्यूटेड अंडर कोलोरियन सब डिवीजन 2020 to 2023 आप मंगाए सीटीसी कॉपी ऑफ डीपीआर कॉपी ऑफ टीएस कॉपी ऑफ टेंडर एग्रीमेंट justified copy, comparative statement L1, L2, L3, tender approval copy, tender acceptance copy, EMD copy, bank guarantee copy, detail of bill payment, xerox of check, detail of bill payment, counterfoil, AC, work order copy, geotech report, miscellaneous report, detail of LOC, completion certificate, NIT, measurement book, status, file copy, sanction order copy, 7 days. Yeah, 7 days. सर ये इलेक्शन में थोड़ा में दिया है नहीं वो फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी का होगा या तो हम लोग आपका बेस क्या है आपका फॉर्म में ना बेस है आपका बेस का तो फॉर्म में तो ये है आपका खुद का फॉर्म में है ये देख लो इसमें आप देखो ये आपका फॉर्म है हम लोग तो फॉर्म में तो ना डिस्कस करेंगे आप साइन भी किया है नीचे वो तो फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी में ना आप ऐसे मेंशन किया है जब आप फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी में गया है तब ना आप ऐसे मेंशन किया है लेकिन आपका तो इसमें तो पीआईओ आपको रिजेक्ट कर देना है पीआईओ शुड टेक नोट कि ऐसे वाला एम्बिगुअस वाला अनस्पेसिफिक वाला को आप इन रिटन में आप लिखना है यू राइट बैक टू देम दैट वी कैन नॉट प्रोवाइड यू सच ambiguous voluminous unspecific information because we also have other works to do ऐसा इसको फर्स्ट दैट टाइम का पीआईओ ही रिजेक्ट कर देना था आप नया फाइल करो कर आप ऐसे कीजिए आप स्पेसिफिकली फाइल कीजिए एक्सप्रेशन नहीं सर उसको हम तो ये फाइलिंग में भी सर कहीं मिसप्लेस भी हो गया होगा लेकिन ये मेरा मेरा अपना रिकॉर्ड का मुताबिक ना सर हाँ तो मेरा इसमें तो पूरा ये स्पेसिफिक मेंशन किया है हाँ तो इसमें भी अभी किया देता है ठीक ही है तो ये करने से भी होगा ज्यादा अगर ये होने से आपका ये सीरियल नंबर 1 को भी ना स्पेसिफिक कुछ लेके आया है हम भी अपना अपने आके ये जो देखिए सर हम लोग का भी एक प्रॉब्लम है जैसे मेरा भी संग्राम में सर बहुत ही कम है जैसे हम लोग का क्लब्समैन होना है और डिवीजन में क्लब्समैन नहीं है एलडीसी सफिशिएंट नहीं है जैसे ओके जैसे पीए ये सब कुछ करना पड़ रहा है जैसे ओके और दूर दराज पे भी है ना हम लोग इसलिए बहुत और हम भी सर एक्सक्यूज तो ये नहीं लेता है लेकिन फिर भी हम डिवीजन में भी ये फर्स्ट टाइम आया है ओके ये जस्ट प्रमोशन मिल के ना अभी आपका जैसे आपसे सुना है तो ये बोलूंगा हम सारा चीज है
जैसे आपने बोला है वोलुमिनस को ऐसे आप कर सकते हैं, कुछ भी मालूम नहीं है हमको ना सर, इसलिए अभी से थोड़ा ये करेगा, लेकिन इतना तो मालूम है कि कमीशन में जो भी होगा अटेंड कर देगा या टाइमली या किसी को रिप्रेजेंट करने देगा, ओके काम आया इंडिया में भी आया से ट्राई कर रहा है, इसलिए कुछ अभी का तो स्पेसिफिक है ही हम लोग कुछ ये क्या अभी ऊपर वाले में गलती हो गया कुछ मेरा भी है ना, अभी अभी कुछ तो पनिश करेगा, लेकिन जो नहीं है तो उसको हम लोग भी क्या करेंगे ना आप आप एक फ्रेश से फाइल करो। ये जो आपका फॉर्म ए है, फॉर्म ए में आप कहीं भी एनेक्सर अटेस्टेड ऐसा नहीं लिखा है। ये आप फॉर्म ए को फिर अमेंड करके जब आप फर्स्ट एथलेट अथॉरिटी में गया है तब आप स्पेसिफिक हुआ है, लेकिन वी हैव टू डिस्कस योर फॉर्म ए। हम लोग तो फॉर्म ए को ना डिस्कस करेगा, तो उसमें इसमें भी आप फर्स्ट एथलेट अथॉरिटी वाला में भी तो आप जो जो मंगाए, सीटीसी फोटोकॉपी ऑफ डीपीआर मंगाए ना, फोटोकॉपी ऑफ टीएस, photocopy of tender agreement, photocopy of justified copy, photocopy of comparative statement L1L, tender approval copy, tender acceptance copy, EMD copy, bank guarantee copy, detail of bill payment, xerox of check, detail of bill payment control, work order copy, geotech report, miscellaneous report, detail of LOC, completion certificate, NIT, MB, bind copy. Bind copy क्या होता सर ये स्पेलिंग बिंग होना चाहिए। है? Sanction order copy, UC, security deposit, amount detail, number of each bill, name with detailed AC, CTC, photocopy of newspaper publication. अब इसमें मंगा है 1 2 3 4 5 काम का सेग्रियन। ये काम तो सर आपको तो आइडिया नहीं होगा कब 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 हुआ था होगा ये तो, बिकॉज आप तो अभी आए हैं। Maintenance and renovation of various roads under PWD subdivision Colorian 200 lakhs का है 2 करोड़। Renovation and construction of water track from Pai Bogu to Bigo via Pasipalo in Kurumkume 50 lakhs. Renovation and construction of WRSD over Kume River 50 lakhs. Renovation and construction of water track from Segriang to Yaluha village under Kurumkume 50 lakhs. Renovation and construction of WRSD over Kume River 50 lakhs. इसमें से सर आप को कुछ इंफॉर्मेशन जो आप लाए हैं, कैन यू लेट अस नो कौन सा वाला है जो नहीं, कौन सा अभी बनाने हो गया मेनली हम लोग ये वर्क ऑर्डर सिस्टम में क्या है, वर्क ऑर्डर नहीं हम लोग सेशन कॉपी मिला है, ओके तो एस्टिमेट का भी मिला है और चेक का भी डिटेल मिला है, और आपने बनाया है कौन सा बैंक में या बैंक डिटेल होता है ना, बैंक डिटेल तो हम लोग कैसे दे पाएगा, नहीं देगा, देख देता है नहीं देगा, बैंक कहाँ में डिटेल्स तो जब नहीं देगा। बैंक का नंबर किसको कहाँ देता है, हाँ वो तो नहीं सर्विस तो हो रहा है, सो हमको चेक देने से वो कहाँ में डिपॉजिट करता है, वो तो प्रियोरिटी उसका है। नहीं, यू तो कैन नॉट आप दे भी नहीं सकते जानने से, बिकॉज यू आर एंडेंजरिंग समवन्स लाइफ। नो, उस बैंक डिटेल्स को जानने के बाद में इसका पास जाएगा, तो ये कहीं खराब सोच वाला आदमी का पास में बैंक डिटेल चला जाएगा तो वो आदमी उसको किडनैप भी कर सकता है ना। तो ऐसे वैसे तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इफ आई ऑर्डर इट टू गिव। इसलिए आप लोग बैंक डिटेल्स मत मांगो, हम देगा भी नहीं, और ये देना इलीगल है। बैंक डिटेल्स कभी नहीं मांगता है। आपका बैंक डिटेल्स भी आप कैसे कोई आदमी को ये मांगेगा? और एमबी का जो रिकॉर्डेड एमबी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ओके ओके। रिकॉर्डेड तो होगा सर, तो व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू कैन गिव आप उसको प्रोवाइड कर दीजिएगा ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ऐसे तो हम लोग बोलेगा बिफोर 5th जून। अभी तो मार्च है, अप्रैल में जून, ईयर फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। जो जो इंफॉर्मेशन सर के पास में है आपको वो सब मिल जाएगा, और नेक्स्ट टाइम में आप ऐसा फॉर्म है जैसा आप पहले जैसा अप्लाई ऐसे मत कर, रिजेक्ट कर देगा पीआईओ, ये सब रिजेक्ट करना है, ये सब यहाँ तक आने नहीं देना। रिजेक्ट किया थी सर, ये 3 केस डिवीजन में था। हाँ, ये 3 केस मीन्स ये सेम सेम पीआईओ का। हाँ ये सेम है। हाँ, इसका सर ये सेम है क्या? 13 केस
हाँ ये भी तो वही है हाँ वही है। नहीं, सुन लेगा पहले इसको हम देख लेंगे सुन लेंगे जो both present and the commission बाकी कुछ और की commission हाँ। order को लिख लो और तक the PIO to provide information pertaining to one maintenance annexer का जो serial number 1 2 3 4 5 and rest informations those that cannot be provided by the PIO need not be provided. इसमें कोई कोई आप ये मांगा है टेंडर में ना टेंडर का भी डिटेल्स फॉर्म का ना फ्री में मांगा है ये फॉर्म नेम एजेंसी नेम विद डिटेल वो तो नहीं मिलेगा फॉर्म नेम हाँ फॉर्म नेम तो मिलेगा एजेंसी नेम तो मिलेगा बाकी तो मिलेगा सर ये जो टेंडर प्रोसीजर का है उसका डॉक्यूमेंट भी ये होगा और वर्क नहीं ऑर्डर नहीं सिस्टम नहीं वाला नहीं जैसे फॉर्म का फॉर्म नहीं बहुत हाँ हाँ अकाउंट हाँ आप हाँ अभी जो बोला है ना कुछ और दीजिए नहीं फॉर्म का कोई कोई मांगता है आप लोग फॉर्म का भी क्रेडेंशियल्स वो भी नहीं देंगे वो तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है और आप किसी का फॉर्म का क्रेडेंशियल्स मांगने के लिए आप उस फॉर्म का साथ में compete करके सब आप मांग सकते हैं compete नहीं किया टेंडर में पार्ट नहीं लिया बाहर करा ओके ये फॉर्म का वो फॉर्म का डिटेल्स हमको दे दो वो गलत है वो नहीं मिलेगा और ज्यादातर इसमें वर्क ऑर्डर पे भी हुआ है हाँ sir what is you write to him very clearly that these works were we plotted the tender for this work this forms came this form was given and then rest information जहाँ जहाँ आप वर्क ऑर्डर में किया है this works were given for work order and ये है but the payment details bank details will not be given and should not be given so we'll hear you on sir then next में आप ऑनलाइन आ जाइएगा उतना दूर से आने का जरूरी भी नहीं है ऑनलाइन भी है हम लोग का तो ऑन और बिफोर जून 5th जून को हम लोग नेक्स्ट हियर करेंगे आप भी यहाँ दूर से आना नहीं है तो ऑनलाइन आ जाइएगा आप उसका पहले जाके एक बार समवेयर अप्रैल लास्ट में एक बार पता कर लीजिए आपका बीच सर, आप में उस दिन आपको कांटेक्ट भी किया था ना ये आप बिजी था होगा ना नेक्स्ट केस भी सर आपका ही है सेम सेम इंफॉर्मेशन है ना दूसरा इंफॉर्मेशन एंड देन इसमें कैंसल है वारंट ऑफ एरेस्ट वेरिएबल वारंट ऑफ एरेस्ट it is cancelled and send copy to the OC from Sapulong Tumina चौथी संग्राम संग्राम OC संग्राम इसको भी कॉपी देना जी इसकी भी हमको हाँ सबको सब में SP DC को भी उनको इसमें अब क्या क्या मांगा है बताइए तो ये मांगा है वर्क ऑर्डर मांगा है PPR वर्क ऑर्डर जेरोक्स चेक डिटेल ऑफ बिल पेमेंट जियो चेक MIS LOC MB सेम सेम सर चीज सर मांगा इसमें ये टेंडर का प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है ये वर्क ऑर्डर है नहीं नहीं आपका जो फॉर्म में वहाँ भी सेम वर्ड है यहाँ भी सेम वर्ड है वर्क एग्जीक्यूटेड अंडर फॉलोइंग सब डिवीजन 2020 to 2023 मेजरमेंट सब सब एक ही है वर्क ऑर्डर कॉपी Xerox of check, detail of bill payment, geotech report, miss report, detail of LOC, MB status, sanction order copy, firm name agency, transaction of bill amount to firm agency contractor, detail of running bill, completion certificate, UC by PWB Commissioner, SPSLE. ये सब काम आपका नजर में हो गया है नहीं सर हम ये सब बिल्डिंग है उधर नहीं है इसलिए हम लोग ये क्या है
सर ये अभी पहले जब ये ग्रामीण पर्स फ्लो में रास्ता नहीं है वो कनेक्टिविटी नहीं होने समय वो बात ही नहीं है ना। अभी ग्रामीण भी जा सकता है, सरली पर्स फ्लो जहाँ में भी आप जा सकता है, वो तुम 2-3 दिन का रास्ता भी नहीं है, सुबह जाके इसमें भी सर देख लीजिएगा। हाँ, तो पास में घर के पास में है ये सब। आपका पास ही होना चाहिए, ऑफिस में तो होना चाहिए। सर मेरा जी जी, ये इसको भी वही सेम ऑर्डर जाएगा 5 तारीख को, फिर हेयर करेगा व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन सर। एंड इसमें भी वो आपका ये कोई भी टेंडर वाला नहीं, पूरा वर्क तो सिस्टम वाला है ना। जो चलेगा हाँ तो आप भी टेंशन ये हमको है ना। अपना एक्टिव है इसमें भी है हाँ हाँ, कॉपी ऑफिसर एसपीडीसी। और इसमें दूसरा इसमें बोलिए 204 में ये भी अलग अलग काम है। काम पता चलेगा। ओके ओके, हाँ। ये भी पूरा वर्क तो सिस्टम ही है। होगा। ये 3 है ना आपका, इसको भी सर देख लीजिएगा। हाँ जी जी। So the informations are not with you. Write to him that these informations are not with me, and you can get those informations from that office. It's okay. Whatever same order, same date. So on or before 5th June, आप इसको देख लीजिएगा. On 5th June we'll hear you. Either you can come in person like today, or you can come online. Sir. Thank you. 205 number time versus Yes. Member Secretary Arunachal Pradesh Bank Resource. Yeah. when we would do. But also, sir, I'm sir, extremely sorry. I did not to attend and honorable person was sent to us. Actually, sir, we have not received the the letter for attending the education portion. So, sir, I being the member secretary and the CEO come director of this APBR here. Member Secretary, not the Member Secretary, CEO, Director. And I have I have got my nodal official who happens to be the PIO of the this one, of our agency. And then there is an assistant PIO. But I have requested them to attend, and it seems that it has been not attended. However, sir, the warrant of arrest was issued in my name, and I've been arrested by the chief of the station, and then I had come over here. Regarding this case, earlier also this appellant, yes, this is the one. He has just withdrawn this case, withdrawn this case from this one. And earlier also, during in my PIO, he has given this one during February 2024. He has given all the information to him, but then I'm telling them to deposit the required amount fees in the favor of the information commission. Yeah. Okay. But he said that he will give the fees and this one everything, and then he will then take the information of all this. But till now he has not come to the office also to seek that one also, and he's not filled up the chara in the favor of this one. So sir, I have just come to from the reports I could come to know that one. So sir, this is my humble submission to the court, sir. Since he has not come in the earlier time, February 2021 is February 2024, and then and this was the one, sir. He is asking to this one. Sir, sir, sir. This was this one.
Yes, we don't discuss that time. The complaint in the this one they made to us. Yes, we wrote that one on time. Way of present, present action, consecutive for the second time. Heard the piano. The piano is stated there. Head, withdraw, complain, GCFN, HOEFF. HOEFF means Head of the forestry force, head of the head of, forestry, environment, forest, and climate change, head of environment, forest, and climate change. and climate change. This is Dr. P. On the 3rd January 2025. 3rd January 2025. It is put on record that on 2nd February 2024, the nodal officer AP Bamboo Resources and Development Agency AP APDR EA Department of Environment, Forest and Climate Change, Itanagar, has written to the appellant to deposit rupees 1,720 as the fees for the information. Appellant has not submitted the said fees till date. That more but the fair profit is. The Commission hereby orders going through the statements of the Member Secretary APDRBA and the records produced. It is evident that the appellant is not serious in his appeal and is in disrespect of the procedural laws of RTI Act 2005 by not attending the court hearing despite notices served upon him. Next, if the appellant be serious on his application for information, he would have
submitted the requisite fees to obtain his information. But since he was informed to deposit the fees in the month of February 2024, but till that he has not deposited the said fees. And thereby his intentions are clear that we have only filed it Form A to the office of the PIO, come member secretary, APBRDA, Chilpur, to harass him and with notice. So the RTI Act 2005 should be taken into the highest consideration, that citizens are to apply for their rights as well as entitlements only, and not to harass the PIOs in their individual vested interest. And the Commission hereby orders dismiss the instant appeal on the strength of the letter submitted by the appellant dated 3rd January 2025 to the PCCF, Department of Environment, Forest and Climate Change. And send the hence cancelled. Send copy to the OC Chipu, SP, Mumbai. So we have dismissed this, and then with no liberty to file fresh application. He won't be given the liberty to file the same case to your office. I'll give it in the order. Thank you. Thank you. News 206, Nabam Rakesh versus PIO come up ये क्या member secretary नाम रखे forest come forest. forest corporation अलग online na PIO online नाम Nabam Rakesh नहीं आया है ना कौन ऑनलाइन है अभी PIO आप हैं ओके आपको कुछ ऐसे लिखित दिया है जी नहीं कुछ लिखित तो होना है
जो भी हो आप आए ठीक है। नेक्स्ट टाइम में जब भी आता है तो एटलीस्ट देयर हैज टू बी एन अथॉरिटी लेटर फ्रॉम द पीआईओ, क्योंकि ये कोई ऐसा ये कोई ड्रामा तो नहीं है, कोर्ट है ना, कोर्ट में एवरीथिंग गोज बाय द रिकॉर्ड्स, नो बाय योर वर्बल स्टेटमेंट्स तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट आल्सो, व्हाटएवर बी, जो भी हो आए ठीक हुआ। इसको कुछ इंफॉर्मेशन आपने वो नाबम राकेश को दिया? 11 मार्च को इंफॉर्मेशन रेडी है। इंफॉर्मेशन 12 मार्च। नाबम राकेश sent for consecutively for 2 times. That's right. On from the commission. Third, the representative PIO. अब अगेन वो 12 मार्च को फिर से भेजा उसको 2025। The information were sent through post office by the PIO on 5th June 2024, 5th June 2024, as well as on 12th March 2025 through India through post office. Then appellant absent without what to leave there. Na? And after hearing the representative of the PIO and viewing seriously, viewing BIEWING, viewing seriously on the absence of the appellant consecutively for 2 times, the commission hereby orders: 1. Dismiss the intent appeal. So we have dismissed the appeal. हाँ, dismiss कर दिया है। वो बार बार नहीं आएगा ऐसा। इसमें तो आना है। अच्छा हम लोग जो जैसे है ना फॉर्मेट में रिदम कातो वर्सेस मोगे बोले। यस, ये भी ऑनलाइन किया। both are online. The PIO is online. The appellant absent without intimation. Sir, can we hear from you, sir? Information must be properly provided on 9th January 2020. So have you taken any receipt copy from the appellant? Oh,
Okay, okay. And then hand it over to the client personally. It's the have you shown some receipts, sir? I would have disposed this case, this appeal today itself, but we have to ascertain the receipt. No, if you could have given us some communication details also on the WhatsApp or whatever message that would have. Okay, yeah. So just formally we'll fix the next date of hearing. Again, you don't need to come. You can come online like today. But at least we have to, as a court, we have to ascertain that the appellant has received it because he is the appellant. No, no. But again, without you, though, without you, no. Even if you don't have the time, you can depute someone to come online. Yes, yes, yes. So on 6th, 5th June. On 5th June, sir. You don't have to come. You depute someone on your behalf. June 10th PM.